Can you see my screen? Yes, we are. Yes, we are. Okay, first of all, let us start with API. Okay, yeah. Okay, so for API, what we are doing is we are creating one Mocha framework. Okay, so what you have to do is you have to first of all create a new project folder. Okay, API tests. So I'm telling you the steps. Okay, Okay, yeah. first of all, create a directory, project directory. After that, what you have to do is npm init. This is the command that you need to execute. Okay. So first of all, let me write prerequisite here. Prerequisite is that you have to install Node.js, and then yeah, that's it. Node.js. Okay. After that, you have to create this npm init. This command, execute this command. After that, this package.json file will be created. Okay. So in this file, this dependencies and dev dependencies will be blank initially. Okay. So what you have to do is add these dependencies or install those dependencies. In JSON file. Yeah. Package.json. Yeah. So these dependencies are like required to execute the tests. Okay. So you can install that one by one like that. This one. Say for example, if you want to install Mocha, then like that. If you want to install multiple at the same time, that also is possible like that. So this command will install both Mocha and Chai. If you want to install another, then just give this separated by this blank space, and then it will install all those dependencies. Okay, so main dependencies that we need is this ones: chai http .env and Mocha. Okay, so you can ignore other dependencies because we have not used in our project. Okay, so these 4 dependencies you can remember. Okay, so after these node dependencies are installed, then you can write your tests. Okay, but before that you have to create .env file. .env file contains that key, API key. Create.em file. API. Install dependencies. So what all dependencies you need is you need Mocha, chai, and chai http and .env. Okay, after that what you have to do, create .env file. .env. Yeah. And then add key. Key is equal to, so whatever you key, you get the key from that open weather API. Okay, so you can go to this website, open weathermapapi.org, and then you can create API key for you yourself. Okay, you can sign up, create account,
And if you go to my API keys, you can see your API key there, or you can create new API key. Okay. So after creating that API, you have to wait for at least 2 hours. Create API key on this side, and add the key is equal to whatever key you got from this one. Okay. And the next step that you know to do is, now you can write the test. Okay. So we are going to write the test in Mocha testing framework, and this is how we write it. So first of all, we will need this reference to these dependencies: chai HTTP, then expect assert. Then to read the .env configuration file, you can use this required .env.config, and then chai.use chai HTTP. So what this command will do is, we can use the chai to create the HTTP requests. Okay. After that, we have created some variables that we are going to pass into the URL. So this is the endpoint, and we are going to query the city, state, country, and then we have to pass the API key. Without API key, you will not be able to get the successful response. Then there are some latitude, longitude, these variables we have created. This is required for the air pollution API. And then we have created 2 tests. One is for weather and another is for pollution. So this is the first test, that is for the weather, and the second test is for the pollution. So what we are doing here is, we are creating this new request on this host, that is the API website, and then we are calling the get method. Okay. And .send will actually execute that request, and then response will be sent to the this variable. And async await is like asynchronous programming syntax in JavaScript. So await means wait until this request is successfully executed, and until the response comes back, it will wait. The program will not go to the next line until this stuff is executed. Okay. And then we are printing the response. After that, we are getting the response body. So response is coming in the form of JSON format, and then we are just doing some assertions. We are checking the visibility is 100, then coordinate longitude is this one, latitude is this one, then name attribute is Melbourne, then there is a main attribute, then there is a temperature attribute. So all these things we are checking. So we go to this postman. You can see this running. So you can see here in the query, we can pass this Melbourne and all that thing in an app key as well. If we hit send, we will get the response. So you get the response right there. Alright. And same way we are doing it for the pollution as well. So here, where is in air pollution host, and then get request. If you want to send the post request, you have to put post here, and then send, and response will come there, and finally we are checking these values there in the response. So how we are checking the values? So you have to use this syntax, whatever is JSON dot this attribute. Okay. If it is array, you have to use this array syntax like we have done here, and then just simply put the dot. Any questions on this? Okay, so you have to read Mocha, Chai, HTTP, all that thing for this.
Okay, now next thing that we are going to do is Selenium UI. Okay. So with Selenium UI, what you have to do is you have to create one Maven project in IntelliJ, and then put this dependencies there. Okay. All these dependencies are required. Selenium, JUnit, then JSON simple, then this one Cucumber Java, Cucumber JUnit, and another dependency that you will need is Cucumber Pico container as well. Okay. So we are putting this Chrome driver here, that executable file, because to launch Chrome we will need this Chrome driver. And in the source directory we have got this test directory, and there we have got resources where we are putting all the Selenium feature files, and then there is a tests here. Okay. So in the feature file, it is very simple. Verify the registration fee calculation feature on the vector error website. So I am on the home page of it for here. I should be able to calculate and see the registration fees for the vehicles. And if you look at the Selenium steps, first of all, we are going to that website. After that, we are getting the 3-month fees. We are calling this fees function here, method, and it is very simple. Like we are just clicking on the links, and then finally we are getting that values for 3 months, 6 months, and 12 months. The prices after hitting the calculate button. And what we are doing is we are putting that in the JSON array, because we want to save it in the JSON as well at the end. So there are various types of vehicles, like car. There is a people mover fees, then UTE fees, then motorcycle fees. So depending upon different vehicles, there is a different fees, registration fees. So we have done it for car, and the same way we can do it for other vehicles as well. And finally we are putting it in the JSON object, and what it is doing is write to the file. So finally we are writing it to the file, that JSON object. So I will just execute this one. Now the Chrome is launched. You can see it, right? Okay, headless per annora. Hmm? Headless. Okay, abhi.
You can see now. So it is going to I want to, then click on calculate registration fees, and then it will select car, postcode, petrol, all those things, and you can see this one, JSON object. So for car, 3-month fee is $170, for 6 months 341, and 12 months 683. In the same way you can put for other types as well. Okay. So in here we are putting it in my shared class, where we are launching the browser, maximizing it, and then that's it. Like, it is not much differences there. And then there is a Cucumber options annotation there to launch the tests from Giant. So that's all here. It took a lot of time, like it was not easy. 4 or 5 hours it took. So it is not easy, like it is not easy. I thought it will be very straightforward, but it was difficult. Because if you look at the code, you will see that a lot of places we can't use this normal dot click. We have to use the execute script, JavaScript executor. Otherwise we will get a lot of exceptions like click intercepted, element is not interactable. All those exceptions you will find. Stale element reference exception, this kind of exceptions you will find. So that's all. Have you any questions on this one? Okay, you can write now test strategy yourself. Oh, it is very simple, because it is already taken a lot of time developing of this feature. I will put very high level, but you can refine it. You have to do it yourself as well. I can't do everything. यस भैया मैं कर दूंगा, मगर ये मतलब ये कोडिंग का क्रैक करना है भैया बस. Coding, the program is working as you have seen here. Okay. Only thing is you have to explain it. Okay. Just go through the code and then check if you are finding any difficulties. And I will put very high level scenarios, the test strategy. Then you can go into the detail, because that is manual stuff. It is not automation stuff. Okay. तो जो कब करेगा भैया वो? I will do it today. Okay, but very high level. Okay, you have to do it. In these scenarios, test cases, you should be able to write it. Okay. Okay then. और भैया मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये सॉरी, ये मेरा सिस्टम में मुझे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा भैया, मुझे पता नहीं है क्यों. वो तो थोड़ी. और एक क्वेश्चन है भैया, अभी एग्जांपल, अभी आपने गूगल क्रोम का वर्जन है 89 का जो भी है, अभी एग्जांपल लेटेस्ट वर्जन है, ये वर्जन का इश्यू कैसा मिटा सकता है कि ऐसा वेब ड्राइवर मैनेजर बोने ग्रेशिया का डिपेंडेंसी डाला तो वो कुछ ऐसा कुछ है उसका? So 89 जो लेटेस्ट है वो डाला है मैंने. हाँ भैया. तो अगर क्रोम वर्जन अगर नया आता है तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा. इसका प्रॉब्लम इश्यू रिजॉल्व करना है बोला तो अपन क्या कर सकते हैं? एक क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ेंगे और इसको डिलीट करके वो नया वाला यहाँ पे सेव करने का. एवरी टाइम नहीं, जब भी चेंज होता है, जब नया क्रोम आता है नया वर्जन, तब चेंज करना पड़ता है मोस्टली. एक क्रोम ड्राइवर पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. अभी अभी मेरा है 90 है, आप 90 का लेटेस्ट वर्जन है, तो 89 का जो भी है तो इसीलिए वो एरर मैसेज आ रहा है शायद. हाँ, तो वहाँ पे जाके देखो, नया लेना पड़ेगा तुम्हें. क्रोम ड्राइवर देखो, क्रोम ड्राइवर कौन सा,
क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन से क्रोम वर्जन के लिए कौन सा ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये 91 जो है सिर्फ 91 को सपोर्ट करेंगे, 90 का जो है सिर्फ 90 को। तो तुम्हारे पास अगर 90 है क्रोम वर्जन तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास 89 है इसलिए 89 चल रहा है। अभी मैं वैसा कुछ दिक्कत नहीं है ना भैया, अभी 89 है तो अभी 90 डाला तो वो चलेगा, वो नहीं रन होगा। वर्जन कौन सा है क्रोम उसके ऊपर है। क्रोम वर्जन 89 है तो चलेगा, 90 है तो नहीं चलेगा। मेरा 90 है तो 90 ये डाउनलोड करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, डाउनलोड करके फिर उसका पाथ भी चेंज करना पड़ेगा। क्रोम 89 का मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने पाथ दिया है वहाँ क्रोम ड्राइवर 89 की जगह पे 90 डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी 90। ये कैसा कर सकते हैं भैया, वो डाउनलोड करके डिपेंडेंसी में डालना है क्या? वो नहीं, सेव करना है, सेव एक्सी फाइल सेव करना है इधर। इसको डिलीट करो और उसके बाद उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो भी चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। ओके। और इसका आंसर कैसे बोलना है भैया? एक इंटरव्यू पूछा था एक बंदा, ताकि एग्जांपल जो भी है ब्राउजर वर्जन अभी अपग्रेड हो रहा है, तो इसका लिए आप क्या करते हो सेलेनियम पे? तो मैंने बहुत डिपेंडेंसी में जो भी है सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर बोनग्रीशिया का है ना, वो डिपेंडेंसी डाले तो चलेगा बोल के बोला। वो आंसर करेक्ट नहीं है शायद। और डिपेंडेंसी क्रोम ड्राइवर ऑटोमेटिकली भी हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड। हाँ, अभी लेटेस्ट वर्जन का जो भी है तो वो कैसा एक्सेप्ट करना बोले तो वो इसका तो ये इसीलिए ब्राउजर स्टैक यूज करते हैं लोग। ब्राउजर स्टैक पे हमें वो लेटेस्ट इस पे लेता है ऑटोमेटिकली, और मैन्युअली अगर करना है तो फिर तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा, डाउनलोड करो उस पे डालो। भैया ये एक है ना भैया, ये अभी जो भी है ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने भिजाया ना, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड टेक्निकल टास्क, तो इसमें मैं आंसर्स ये कैसे बोल सकता हूँ? एक लाइन बोल रहा हूँ ना भैया। ऐड ऑटोमेटेड टेस्ट फॉर द ईच सिनेरियो TDD, तो PBD में अपन कर दिए, और इसके बाद प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर रनिंग द टेस्ट रीड इन फाइल, ओके आपने कर दिया। और कंसीडर एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल हाउ कुड द टेस्ट रन विद डिफरेंट URLs। इसका क्या बोला वो? नहीं, आप वो कैप्जेमिनी का है ना भैया डॉक्यूमेंट्स। हाँ, क्या था लास्ट वाला? हाँ, वो उसमें टास्क में थर्ड ऑप्शन पे डॉट बुलेट पॉइंट में कंसीडर एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल हाउ कुड द टेस्ट बाय रन विद डिफरेंट URLs। URL फिर यहाँ से चेंज करना पड़ेगा ना, ये हमने दिया था यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो URL है वो फिर वेरिएबल में डाल के फिर वो चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। डॉक्यूमेंट एंड सबमिट एनी डिफेक्ट यू माइट फाइंड, तो अपन तो डिफेक्ट कुछ फाइंड नहीं हो सब कुछ बोल सकते हैं भैया इसका आंसर। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी गिवन फॉर ओवरऑल एलिगेंस ऑफ द सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग फॉर द टास्क रिक्वायरमेंट्स। हाँ, तो ये फ्रेमवर्क तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो फ्रेमवर्क समझ में आ गया ना तुम्हें? फ्रेमवर्क, हाँ, ये फीचर फाइल कैसे रखा है ये सर, ये सब बताना चाहिए। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ नहीं किया हमने, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बता सकते हैं उनको, तो इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन तो उसको बोलने का अगर मुझे ज़्यादा टाइम दिया तो मैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में उसको रखूँगा कोड को। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, बट
did not use in the code. हाँ उसको टाइम लगेगा तो इसलिए नहीं होगा। given time. और ये वाला भैया स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। हाँ तो स्पीड में वो उनको बोलो कि कुछ थ्रेड डॉट स्लीप ऐसा फिक्स वेट नहीं डाला है हमने कोड में। काफ़ी सारे लोग थ्रेड डॉट स्लीप डालते हैं तो हमने वो नहीं डाला है क्योंकि हमारा टेस्ट रिलायबल है और 10 बार अगर एग्जीक्यूट किया तो भी चल रहा है। फिर इसके बाद कोडिंग स्टाइल, रीयूजेबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। इसका वही बोल सकते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल्स। ओके और हाँ वही है, कुछ इसमें नहीं है। फिर इसका हाउ कुड यू डेवलप द सॉल्यूशन फर्दर गिवन मोर टाइम। हाँ वो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का बोलते हैं। ओके पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और रिपोर्टिंग फॉर्मेट एंड टेम्पलेट्स यूज फॉर द फ्रेमवर्क और टेस्ट प्रोजेक्ट। जे यूनिट, हाँ जे यूनिट कुकुम्बर से अपन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और कौन सा यूज करें भैया अपन एपीआई में? एपीआई में मोका का फ्रेमवर्क है, उसमें रिपोर्ट जनरेट होता है। मोका फ्रेमवर्क पे रिपोर्ट एक्सएमएल टाइप रिपोर्ट बनता है इसमें जो मैवन में जैसे रहते हैं ना। हाँ सेम एक्सएमएल रिपोर्ट। ये तो जे यूनिट का हो गया। और एचटी डिफॉल्ट पे एचटीएमएल भी डाल सकते हैं ना भाई, और डिपेंडेंसी डाल, बिना डिपेंडेंसी से भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेवर पे। और इसका जावा यूज इसका अपन जो भी है परफॉर्म डेटा असेशन बोलो तो भैया ये अभी जो भी है डेटा है ना, डाटा है अभी एग्जांपल सेलेक्ट टाइप ऑफ अपन इसमें कैप्चर द डेटा एंड एंटर दिस डेटा बैक इन एनी एक्सेल और जेसन फाइल में दिया है ना, ये देखो। हाँ अपन जेसन फाइल बन रहा है इधर, ये यूआई पे, सॉरी हाँ यूआई ऑटोमेशन पे हाँ जेसन फाइल में आ गया। और नो रजिस्ट्रेशन लॉगिन शुड रन ऑन लेटेस्ट क्रोम और फायरफॉक्स। ये भैया लेटेस्ट योर टेस्ट शुड रन ऑन लेटेस्ट क्रोम और फायरफॉक्स। इसका आपने बोला कि वो क्रोम ड्राइवर डिपेंड करता है, क्रोम ड्राइवर 89 पे या 90 डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ये प्रोवाइड ऑटोमेशन अप्रोच कोड इंश्योर पेलोड इनपुट डाटा इज सप्लाइड डायनामिकली। इसका आंसर क्या बोलना भैया? इसका एपीआई ऑटोमेशन पे सेकंड बुलेट पॉइंट, फर्स्ट बुलेट पॉइंट बोलो तो प्रोवाइड एन ऑटोमेशन अप्रोच टू टेस्ट बिलो 2 एंड पॉइंट्स। इसका ऑटोमेशन अप्रोच में उनको बोल सकते हैं कि 2 फ्रेमवर्क्स मतलब 2 टेस्ट बनाए हैं। 2 टेस्ट यहाँ पे देखो 2 टेस्ट बना दिए हमने, एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लिए और एक गेट वेदर के लिए। हाँ एयर पोल्यूशन एंड गेट वेदर। इसके बाद भैया इंश्योर पेलोड इनपुट डाटा इज सप्लाइड डायनामिकली। इसका आंसर भैया डायनामिकली दिया है ना, ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए थे, ये की वगैरह जो ENV फाइल में रखा है ना वो सब डायनामिक है, मतलब चेंज कर सकते हो। और बाकी की जो ये जो वेरिएबल्स है वो भी उस फाइल में रख सकते हो। .env कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वहाँ पे चेंज किया तो सब चेंज हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम मेलबर्न की जगह पे सिडनी करना है तो सिडनी वहाँ पे डाल किया तो वो सिडनी का डेटा निकलेंगे। हाँ ओके। अभी जो भी है इस पे जाके अपन नहीं कर सकते। एग्जांपल अभी जो भी आपने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके एग्जांपल मेलबर्न और सिटी जो भी है नाम डाला तो इसमें चेंज होगा। ओके और सॉरी रेस्पॉन्स वैल्यूज
are asserted and validated in the code. Asserted by अपन chai. ये दिया है ना expect. Expect का. ये assertions है सर expect वाले. Expect assertions. तो ये जो भी है assertions from chai. Yeah. हाँ देखते सर okay. Chai assertions. Expect का जो भी है वो JavaScript okay. Sorry assertion okay. ये वाला भैया ये जो जनरली नीचे का कॉल करंट वेदर डाटा फ्रॉम वन लोकेशन आइडेंटिफाई करंट वेदर डाटा यूजिंग सिटी नेम सिटी कोड स्टेट कोड कंट्री कोड ये क्या है ना ओके सिटी कोड और स्ट्रेटजी ओके ये स्ट्रेटजी what is it test strategy in detail understanding your test case development okay भाई ये हाँ ये आपके कृपा से ओके और इसके बाद इसके और क्या पूछेगा भैया हाँ आप बोलो ना प्लीज गाइड करो ना इसके बाद वो कुछ पूछेगा इसके बारे में इसके बाद ये पूछ सकता है कि जावा स्क्रिप्ट में क्यों बनाया जावा में क्यों नहीं बनाया हाँ सॉरी भैया यस तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बना दिया जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं जावा में भी कर सकते थे ओके रेस्ट अश्योर्ड फ्रेमवर्क है उससे भी यूज करते हैं जावा में रेस्ट अश्योर्ड फ्रेमवर्क यस ओके रेस्ट अश्योर्ड फ्रेमवर्क मतलब काम तो वही करता है कुछ डिफरेंस नहीं सिर्फ लैंग्वेज अलग है क्या पूछेगा भैया जावा में ओके ये यूआई ऑटोमेशन सेम अभी जावास्क्रिप्ट में यूज करे तो फिर वो जो भी है अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क्स कर सकते हैं चाय नहीं तो सॉरी मोका जो भी है फ्रेमवर्क मोका सेशन चाय वो इसी शब्द में बोले तो एन यूनिट और एक्स यूनिट फ्रेमवर्क MS build you get perfect software और भैया और एक जनरली ऑटोमेशन अप्रोच आपने क्यों लेगा और कैसा लेगा उसका आर्किटेक्ट बोलो तो ये बताओ क्या भैया ऑटोमेशन आर्किटेक्ट बोलो तो कि अभी टेस्ट रनर फाइल्स ये जो भी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स है ना भैया पेजेस फोल्डर्स वो बताना है क्या इंटरव्यू में आर्किटेक्चर मतलब ऑटोमेशन आर्किटेक्चर बोलो तो आर्किटेक्चर में वो बता सकते हैं कि नॉर्मली JUnit वगैरह यूज करते हैं टेस्ट इंजन वगैरह यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके फिर बना सकते हैं रिपोर्ट्स और उसमें फिर बता सकते हो रिपोर्टिंग का एक अलग यूनिट रहेगा उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रहता है वेरिएबल्स उसका अलग रख सकते हो उसके बाद डिफरेंट ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए एक ब्राउज़र एक बना सकते हो ब्राउज़र फैक्ट्री टाइप फंक्शन तो वो सिर्फ उस ब्राउज़र को लॉन्च करेगा